पिले प्रीवियस वीडियो रे हमें डिस्कस करथिले डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम 2 3 4 5 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें डिस्कस करि सारिचे से क्लासिफिकेशन सिस्टम को साइंटिस्ट देइथिले एंड तार डिफरेंट किंगडम्स गुडा कोन से सब हमें देखि सारिचे एबे हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऊपर टिके बेसी फोकस करिबा जदि हमें देखिबा द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन was given by जेमति हमें आगुरु कहिचे that is given by R.H. Whitaker. Okay, the R.H. Whitaker classified the organism on the basis of mainly 5 characteristics. The first characteristics is the cellular organization. Second can be the cell type. Third, the type of nutrition. Fourth, the type of reproduction. And fifth, the most important, evolutionary relationship. आउरी बहुत सारा कैरेक्टर को से कंसीडर करिसंती न्यूक्लियस अच्छी कि नहीं सेल वॉल अच्छी कि नहीं ऑल दिस कैरेक्टर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑल दिस कैरेक्टर वर कंसीडर बट मेनली बेस यदि हमें कहिबा ऑल दिस 5 कैरेक्टर्स आर द बेस ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हाट इज द सेल टाइप व्हाट इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन व्हाट इज द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन व्हाट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज द इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस और इवोल्यूशनरी सिमिलैरिटीज बिटवीन डिफरेंट kind of organism. Okay, जदि हमें suppose organism को अबिका describe करिबा divide करिबा 5 kingdom रे then first हमें देखु जे what is the cell type. जेतेबेले हमें cell type को देखिबा that means we are considering is that cell has a prominent nucleus or it has a kind of very deterioratory or on हमें कौन कहि परिबा very low kind of nucleus or any no definite nucleus. Okay, तो first जब हमें cell type विषय रे कथा होचे हमें एटा देखिबा जे is that organism has a definite nucleus or it has an indefinite nucleus. Clear? So if we consider the cell has no definite nucleus, so no definite nucleus, if the organism has no definite nucleus we place them आउ तो लिखि दउची जदि नो डेफिनाइट न्यूक्लियस हला ताकू गोटे रखिबा जदि डेफिनाइट न्यूक्लियस हला ताकू गोटे रखिबा डेफिनाइट न्यूक्लियस दीटा कैरेक्टर आसिला तो हमें केमिति जिबा जदि डेफिनाइट न्यूक्लियस तार नथिबा पिले ताकू हमें कोन करबा गोटे ग्रुप पे रखिबा जा ना हला मोनेरा सीधा रखि देबा मोनेरा रे बुझेला तो जदि जण गोटे सेल जहा पाखरे गोटे ऑर्गेनिज्म जहा पाखरे न्यूक्लियस नाही सेही प्रकार सेल को सेही प्रकार ऑर्गेनिज्म को हमें मोनेरा किंगडम अंडर रे रखिले जेमिति कि बैक्टीरिया ता पाखरे डेफिनाइट न्यूक्लियस नाही बट जदि ता पाखरे डेफिनाइट न्यूक्लियस अछि गोटे ऑर्गेनिज्म पाखरे एबे हमें नेक्स्ट क्राइटेरिया को जिबा देखिबा जे तारो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन केमितिया कोन से यूनिसेलुलर ना मल्टीसेलुलर तो सेकंड टाइप ऑफ क्राइटेरिया वी आर कंसीडरिंग दैट if that organism is unicellular cell organization तो से सेल ऑर्गेनाइजेशन रे हमें देखुचे जे कोन से यूनिसेलुलर और से मल्टीसेलुलर जदि से यूनिसेलुलर हेथिबो देन हमें ताकू गोटे ग्रुप रे रखि दबा जा ना होची कोन प्रोटिस्टा तो सी होची कोन Protista. That means if an organism has definite nucleus but unicellular, they will be considered as a protista. Clear? And जदि से multicellular हेतिबो एबे हमें type of nutrition को जिबा जदि हमें type of nutrition को देखिबा then से तीन प्रकार nutrition organism टे store को show करई पारिबो कोन कोन हेई पारिबो देखो maybe the organism show autotrophic nutrition
maybe the organism show saprophytic nutrition, maybe the organism show heterotrophic nutrition, बुझेला जदि से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देखैबो ताले हमें ताऊ कोन कहबा हमें कहबा दैट ऑर्गेनिज्म इज द किंगडम प्लांटी तो सी किए ना किंगडम प्लांटी क्लियर जदि से सैप्रोफाइटिक देखैबो हमें कहबा से होची किंगडम फंजाई से होची के किंगडम फंजाई जदि से हेटेरोट्रॉपिक देखैबो हमें कहबा से होची किंगडम एनिमालिया बुझियला क्लियर तो पांचटा किंगडम तमे क्लासिफाई कर देलो ता माने जे प्लांटी हबो तमे कोन कहबो जैसे यूनिसेल सॉरी तार डेफिनाइट न्यूक्लियस थिबो सी मल्टीसेलुलर हेइथिबो सी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करूथिबो ताके में प्लांटी रखिबा जे डेफिनाइट न्यूक्लियस थिबो मल्टीसेलुलर हेइथिबो आउ तार सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन थिबो ताको फंजाई रखिबा जहार डेफिनाइट न्यूक्लियस थिबो मल्टीसेलुलर हेइथिबो किंतु हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करूथिबो ताको हमें एनिमालिया रे रखिबा बुझियला सो दीज आर द बेसिस ऑफ आउरी डिफरेंट बेसिस अच्छी तमे आउरी स्टेप्स देकी जाई परिबा क्लासिफाई करबा को बट एटा गोटे टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जोटा कि आरएच व्हाइटेकर किछि किछि एई भलिया ही प्रोजेक्ट करिथिले निजरा क्लासिफिकेशन सिस्टम एमती स्टेप देकी से जाइथिले एबे हमें गोटे लिस्ट बनेबा गोटे वेरी प्रिलिमिनरी लिस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो फास्ट आसीबे हमर मोनेरा तापरे प्रोटिस्टा तापरे फंजाई देन प्लांटी देन एनिमालिया ओके क्लियर चलो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज the presence of nucleus presence of nucleus monera they don't have any kind of definite nucleus तो absent protista रे present fungi रे present plantae रे present animalia रे भी present बुझियला second आसीबा the presence of organelle माने हमें एटी कथा होचे द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल आर सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन मे बी ए यूनिट मेम्ब्रेन और मे बी ए डबल मेम्ब्रेन सो सेही भले मेम्ब्रेन मोनेरो रे एब्सेंट थाए आ सबुठी प्रेजेंट थाए दे ऑल हैव द ऑर्गेनेल्स देन जदि हमें थर्ड को जिबा द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल yes the bacteria have or monera have cell wall but it is made up of peptidoglycan in case of protista some have cell wall समस्त न थाए किछि जनकर cell wall थाए fungi रे cell wall थाए but they are made up of chitin plants मनकर भी cell wall थाए but that is made up of cellulose animals they don't have cell wall बुझियला so this is one character fourth रे जदि हम आसीबा mode of nutrition then monera they can perform autotrophic heterotrophic and saprophytic mode of nutrition. In case of protista, they can also perform the autotrophic, heterotrophic is a parasitic भी ही परिवे. They can also perform the saprophytic. Fungi रे mostly all are saprophytic. Plantae they are autotrophic.
animal they are heterotrophic. Okay. आउ लास्ट गोटे कैरेक्टर जदि हमें फिफ्थ कैरेक्टर को कंसीडर करिबा सेल नंबर. सेल नंबर माने तांका बॉडीटा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. मोनेरा आर यूनिसेलुलर. The protista are also unicellular. The fungi are also multicellular. केवल गोटिए एक्सेप्शन सेठी अछि ईस्ट. ईस्ट होउची केवल यूनिसेलुलर आउ सब फंजाई होउचंदी हमरा मल्टीसेलुलर. प्लांट्स मल्टीसेलुलर, एनिमल्स मल्टीसेलुलर. बुझला? So these are some characteristics of five kingdom classification. या छड़ा से मनंकर आउरी बहुत सारा कैरेक्टर अच्छी specific to that kingdom character अच्छी. तो जोटा हमें आगामी वीडियोस मानका डिस्कस करिबा. नेक्स्ट वीडियो रे हमें फर्स्ट मोनेरा विषय डिस्कस करिबा. मोनेरा रो शेप विषय रे, तार फ्लैजेला विषय रे, तार न्यूट्रिशन विषय रे, तार रिप्रोडक्शन विषय रे, तार इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस विषय रे. एवरी काइंड ऑफ डिस्कशन विल बी देयर. तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.